हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी लास्ट मिनट ईद मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने ये लुक क्रिएट किया है। ये ट्यूटोरियल बहुत ही इजी है एंड इस मेकअप में मैंने बस वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरी फेस पर ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोकस फेस प्राइमर dewy इल्यूमिनेट्स। इसमें इल्यूमिनेटर है, तो आपके फेस पर एक ग्लोइंग इफेक्ट आएगी। Break you down, staring at the ceiling, fighting off a feeling. As you can see, स्किन पर कैसे हाईलाइटेड इफेक्ट आ गई। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन वेट एंड वाइल्ड का फोकस फाउंडेशन। इसे मैं एक डैम्प स्पॉन्ज से अप्लाई कर रही हूँ फेस पर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल और मेरी जो शेड है वो इज डू इट बेटर। ये काफ़ी थिक है एंड क्रीमी भी है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोकस कंसीलर। इसे मैं मेरी आईब्रोज को भी अच्छी तरह से डिफाइन कर लूँगी एंड अंडर आइज एंड आईलिड्स पर भी अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक्ट पाउडर। प्राइमरीली मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, मिनी आई शेडो पैलेट। इसके जो ट्रांजिशन कलर है, सबसे पहले ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ दिस कलर मेरी क्रीज एरिया पर, क्रीज को रिफाइन करने के लिए। तो यू कैन सी मेरी क्रीज जो अच्छी तरह से डिफाइन हो गई है। सॉरी गाइज, मेरी जो वीडियो क्लिप है वो डिसमिस हो गई, मतलब मैंने मेकअप किया और वो रिकॉर्डिंग हुई, सॉरी टू से। तो मैंने आईलिड्स पर जो है ये कलर अप्लाई कर लिया, पिंक शेड मेरी आईलिड्स पर यहाँ तक अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट वेट एंड वाइल्ड का एक ग्लिटर पैलेट है, वहाँ से मैंने ये पिंक शेड मेरी आईलिड्स पर अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्लिटरी लग रही है। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, मैंने वीडियो मतलब पॉज कर दिया था एंड रिकॉर्ड जब मेकअप किया उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ परडॉन फॉर दैट। ओके, सो इस तरह से मैंने आई मेकअप कर लिया। नेक्स्ट मैं मेरी आईब्रो को हाईलाइट करूँगी और इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी इस शेड से। तो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश।
सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का हाइलाइटर, मेगा ग्लो हाइलाइटर। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, वेट एंड वाइल्ड का। ये आईलाइनर कम काजल है। तो इसे मैं एज माई आईलाइनर भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का XXL लेस मस्कारा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये सिल्क फिनिश लिपस्टिक। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का ये मेकअप फेस सेटिंग स्प्रे। Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? So friends, ये थी मेरी आज की वीडियो, लास्ट मिनट ईद मेकअप ट्यूटोरियल बाय यूजिंग ओनली वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स जो भी मैंने यूज़ किया है सभी प्रोडक्ट्स के नेम्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स की बाय लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे से और वैसे वीडियोज़ के लिए। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद इन एडवांस। बस 2 दिन रह गई है, बहुत सारा काम है एंड इस काम में आई होप ये ईद मेकअप भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो मैंने लास्ट जो गिव अवे अनाउंस किया था उसकी जो विनर है उसका नाम है ग्रwm। कंग्रेचुलेशंस टू यू। जिन लोगों ने गिव अवे विन नहीं कर पाए प्लीज़ डोंट माइंड, मैं ऐसी बहुत सारी गिव अवेज लाती रहूँगी। तो गुड लक नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।